Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Big Boss is not my cup of tea because I don't think I have the temperament for the show. होता है ना मतलब पीने को तो जहर भी पानी की तरह पी सकते हैं पर पीते थोड़ी. I think he's tired. No, I'm just saying Meher happened, COVID happened, lockdown happened, but this didn't happen. Okay, sorry, continue. You can keep that, that's a fact by the way. Sorry, go ahead. अपनी ले लो तुम. दुनिया ले रही तो हम भी ना ले. Actor 10. Actor 10. Husband वो क्या होता है? He's a difficult husband. As an actor, he's brilliant. Actor सबको पता है, difficult क्यों हो जाता है? एक तो his volume is so loud that मेरा जो भी मैं बोलना चाहती हूँ वो तो सुना ही नहीं देता. So then after a point हमने या तो आप volume कम कर लो या फिर मैं चुप हो जाऊँ, either or. Voice note छोड़ दो, बाद में सुन लूँगा. Also to break that image that everybody still says Raman Bhala. Yeah. But Karan wants to be known as Karan Patel. इस साल coincidentally दो किंग्स का कमबैक हुआ है. एक है हमारे बड़े पर्दे के किंग खान और एक है हमारे टेलीविजन दुनिया के किंग यानी कि करण पटेल. और वो हमारी ये जो मोहब्बतें हैं ये हमें लौटाने आ रहे हैं. तो हम शायद एसआरके की स्टाइल में ऐसे बाहें फैला के उनका स्वागत करेंगे. वेलकमिंग करण पटेल इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स. Wow. Me on India. I love that intro. Thank you so much. I think yeah. वेल करण, एसआरके का तो डिले होने का रीजन हमें पता है, बट व्हाट टुक द टेलीविजन एसआरके सो लॉन्ग टू कम बैक? See, मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया बिकॉज समझने में और प्लान करने में कि अब अगर अपनी ऑडियंस अपने जो फैंस हैं उनके दिल में वो जगह बना जो जगह दी है उन्होंने बड़े दिल से उस जगह को बरकरार रखना है लेकिन किसी और माध्यम से, तो उससे कैसे किया जाए. And it is very important for us to step back and stay away from the limelight for us only to be accepted with bigger arms, like you said. है ना? So I think little bit of distance makes the heart go fonder, is what they say. Yeah. So yeah, I think जितना उन्होंने मुझे मिस किया मैंने भी उनको इतना ही मिस किया. So just I think ये जो मिलाप होगा 13 अक्टूबर को थिएटर्स में ये भरत मिलाप जैसा होगा. आजकल ऑडियंसेस से दैट द कंटेंट इज द किंग. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आपको डरन शो में ऐसा क्या दिखा दैट यू डिसाइडेड टू डू इट? There are a lot of reasons. On the top of the list is that see everybody dreams of making a debut on the big screen, and most, if not all, most of the debuts you see are a typical stereotype debut where you see the hero removing his shirt, hitting 50 men together, dancing in the range, high speed running. वो debut सबका होता है. Everybody wants that kind of debut. So I thought. There are two reasons to this. First of all, there's a least competition in the field of making a debut as an actor because बाकी सबको star qualities showcase करनी है. Acting takes the last, unfortunately, takes the last seat on the board. सबसे कम competition है, and secondly, it's कम खर्चा है. Seriously, because our cinema, if you have to drive a message, it doesn't take too much money. But if you want to just want people to just see you without using their brains, it costs a lot of money. Yeah, मतलब मासी फिल्म में भी मैसेज होते सी लाइक जवान had a beautiful message to it. मतलब point is जवान again शाहरुख खान के dream of making a job because that's King Khan, that's him. He's the god of entertainment. You can't expect to make a debut like that. And not when you make a debut like Kauna Pyare because that time is gone. That era is gone. Today scripts are the hero. So today you need cinema which is content driven. वो टाइम चला गया कि जब हम अच्छा आज क्या शाहरुख खान चल रहा है तो शाहरुख खान को दिमाग में रख के एक स्टोरी लिखो. Which today audiences don't go by that. They all love their stars as much, but just that the stars are not the reason for people to go to the cinema anymore. They are a reason, but not the only reason. वेल करण, ट्रेलर कुछ ही घंटों पहले आया है and it has this line which says कि लाइफ में हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है. So tell me, how was your struggle? आप आपके स्ट्रगल को कैसे सम अप करके बताएंगे? स्ट्रगल तो मैं आज भी कर रहा हूँ एंड आई थिंक जिंदगी भर करते रहना चाहूंगा बिकॉज वो आगे बढ़ने की जो भूख है दैट शुड नेवर डाई. स्ट्रगल टू बी बेटर देन व्हाट यू आर शुड ऑलवेज बी देयर बिकॉज द डे यू कम टू टर्म्स विद being satisfied where you are, who you are, so life becomes very boring and monotonous. What do you look forward to? Today, right from anybody who's applying for a job to Mr. Mukesh Ambani, everybody is still struggling. He's struggling to at his level, he's struggling at his level. But struggle सबको है आगे बढ़ने की. Otherwise life boring हो जाएगी ना. क्या करोगे आप? सुबह उठे सब कुछ आपके पास अगर हो गया तो फिर if I'm क्या यहाँ वहाँ देख के क्या करूँगा?
कुछ तो करना पड़ेगा, तो might as well just do something which is going to add to what your existence already is. ऑल्सो डरन शो में आपको जो कैरेक्टर है उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपको लगती है कि ऑडियंस के साथ ना बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पाएगी? See now there's a if you realize ट्रेलर में वो अब उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो उससे बात करती है, तेरी लाइफ तो ऐसी कैसी. I think that is something which everybody does. Somebody does it very often, somebody does it दिमाग में, somebody does it अपने रूम में कमरा बंद करके बात करते हैं. हर आदमी अपने आप से बात करता है और हर एक का जो रिफ्लेक्शन है या हर एक जो अंदर की आवाज है वो यही करती है जो मानव का रिफ्लेक्शन कर रहा है. वो उल्टी ही बात करती है उससे, क्योंकि जितना आदमी अपने आप को भरोसा देता है, पता है नहीं मैं कर लूँ, पक्का करेगा, लगता नहीं है. तो ये होता है हर एक के दिमाग में 50-50 चलता है. So that is something everybody relate. टॉकिंग अबाउट बॉक्स ऑफिस, आजकल ना ये एक रेस लगी हुई है फॉर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की. प्रेडिक्शंस आ जाते हैं मूवी आने के पहले कि ये मूवी इतना कर जाएगी, उसका ओपनिंग इतना होगा. नाउ दैट यू आर डूइंग योर डेब्यू, so does this thing ever stress you out about numbers, about the box office collection, about the race that is going on? See, it does, because when you're producing a film, it is your debut. Yes, that's the biggest gamble. But at the same time, there's lots that goes in financially, emotionally, physically. You put in a lot of yourself into the project. So obviously the figures do matter. You get a little stressed and tense कि shit, you've invested so much. इतना भी रिटर्न आया, इतना आएगा नहीं आएगा पता नहीं, डर लगता है. But at the same time, it's just having faith in yourself, faith in destiny, and faith in your project, and the assurance that audience will give you the payback for your faith and love. The love. Yeah. I think the audience's love is unparalleled because they are the king makers basically. हम बोलते हैं कि यार ये मेकर है, मेकर वो हैं because वो कितना भी हम बना ले किसी को, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे ना ऑडियंस, तब तक वो जो हमने बना है वो वैसा ही रहेगा जैसा है. सो दे आर द वंस हू मेक एंड ब्रेक पीपल. और क्या आपको लगता है कि ओटीटी पे कोई फिल्म रिलीज हो रही है या थिएटर में कोई फिल्म रिलीज हो रही है, इसमें कोई डिफरेंस है? डज इट बॉदर यू कि दिस शुड हैव बीन अ थिएट्रिकल रिलीज और दिस शुड हैव बीन अ ओटीटी रिलीज? See, honestly, not to take away anything from that medium, but I think OTT has been overhyped in the last few years. Because क्या था कि हमारे ऑडियंस को कुछ नया चाहिए, तो and it happens in all genres. I'll touch upon that. जैसे OTT आया, जब लॉकडाउन हुआ तो OTT शुरू हुआ. अब क्योंकि टीवी देख चुके थे, थिएटर जा नहीं सकते, तो नया क्या सुनाई दिया हमें OTT, तो सारे OTT पे चले गए. फिर OTT जैसे OTT नया था तो सारे चढ़ गए उस पर. अब OTT रोज के डेली शो जैसा हो गया सबके लिए. अब नोबडी एक्साइटेड. एक दौर था ना पहले जब लोग बात करते थे यार वो सीरीज आई तो देखा, ये सीरीज आ रही पता है. अब आधी सीरीज आके चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता जब तक कि हम उसके रिलीज और खत्म होने के 1-2 महीने बाद किसी से सुनते नहीं. अरे किस पे है ये, इस पे है क्या? अच्छा. जैसे पहले जब फैमिली मैन आया था, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड, ब्रिलियंट शो. उसके बाद कितने ही बड़े एक्टरों के शो आए हैं, बट नोबडी एक्चुअली पेड अटेंशन ना कि हाँ ठीक है आया तो आके गया होगा. So OTT is also faded out now. Cinema has come because now theaters have reopened. People are going back to the theaters. So OTT has lost its charm now. Similarly, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट के साथ भी ऐसा होता है ना. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्या बोलते हैं रिग्रेसिव स्टोरी, फॉर एग्जाम्पल बालिका वधू, टीवी का एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चलो चाइल्ड मैरिज का एग्जाम्पल, वो एक शो चल गया तो अब उसी कॉन्सेप्ट पे ना और 5 प्रोड्यूसर ने 5 शो आने दिए. फिर सडनली एक नया प्रोड्यूसर आया जिसने ये मोहब्बत बनाया, तो हम फिर अर्बन लव स्टोरी पे 5 प्रोड्यूसर आ गए. तो हम ट्रेंड बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और उस ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में जैसे पहले OTT था, फिर बीच में एप्लीकेशन में देख लो, जब ट्विटर आया तो ट्विटर वाज इन बूम, फिर इंस्टाग्राम आया, फिर टिकटॉक आ गया तो टिकटॉक ऊपर चढ़ गया, इंस्टाग्राम किसी को पता नहीं. तो हमारे यहाँ हम सब ना मतलब भीड़ में चलते हैं, एक जहाँ चलता है पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है. सो सिनेमा ऑन बिग स्क्रीन एंड टेलीविजन, ये 2 सच्चाई थी, पहले भी थी, आज भी है और कल भी यही रहेगी. इन दोनों के बीच में ना बहुत से मीडियम आएंगे जाएंगे. आपके पास OTT आएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे, अब तो फोन पे लोग फिल्में बनाना शुरू कर चुके हैं. बट ये आपके पास टेम्पररी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते. ये टेम्पररी ब्रीदर हो सकता है आपके लिए, बट OTT आदमी कब तक देखे घर से. इवेंचुअली आपको अगर मैं सारी फिल्में पे OTT पे दूं तो एक दिन आपको फिल्मों से नफरत हो जाएगी, बिकॉज यू वांट टू स्टेप आउट. एक्सपीरियंस चाहिए आप. तो फिल्में हमेशा फिल्में ही रहने वाली हैं और टीवी की ऑडियंस रहेगी. सो OTT अब नथिंग टेक अवे फ्रॉम इट, बट मुझे लगता है कि OTT ओवर हाइप है.
एंड ओटीटी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि गधे घोड़े सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, बिकॉज कोई सेंसर नहीं है उस पर. तो नाउ वी हैव अननेसेसरीली वल्गर कंटेंट गोइंग ऑन, एंड लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज हम 3-4 गालियां डाल देंगे, है ना, और 2-3 कुछ मे बी लव मेकिंग सीन्स डाल देंगे तो हमारा शो टॉक्ड अबाउट हो जाएगा. बट दैट इज नॉट द एसेंस ना. ऑल्सो डू यू थिंक कि टीवी के बाहर मीटी रोल्स करना काफी ज्यादा आसान है? टीवी के अलावा बाहर यू टॉक अबाउट द बिग स्क्रीन, मीटी रोल्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मेंटल बैरियर है ना कि टीवी फेस एंड फिल्म फेस, वो आप तक वो रोल पहुंचने नहीं देता. लाइक टुडे फॉर नो मैटर हाउ एवर bad business your film must have done on a box office, and no matter how big a show yours is on daily show, you will still be a little under the worst actor of films, and the best actor on television will still have a difference, unfortunately. क्योंकि हमारे ऐसा था कि यार टीवी का फेस है, बट वी फॉरगेट द पॉइंट कि अगर एक चेहरा हफ्ते के 6 दिन और लगातार 5, 6, 7 सालों तक ऑडियंस को एंगेज रख सकता है, so that means that happens to become a bigger sellable face than what you are probably trying to do with 3 hours. So, but obviously, everybody has a different dynamic of thinking. Maybe the filmmakers have a different perspective, which could be right. But it just we can sit down. In the West, there's ऐसा concept नहीं है. You see, right from मतलब if you take it from that era. Jennifer Aniston is something which is very today, TV and film. She's one of the biggest Hollywood stars. Started with television, so and nobody वहाँ पे ना लोग जज नहीं करते कि आप टीवी से वहाँ पे ये वहाँ. Like one of the veteran actors also. We were just discussing somebody and one of the iconic Hollywood shit, I forgot his name. He's also again. Yeah, please wait. Clint Eastwood. He was a television face. Then he went on here. है ना, जब Breaking Bad में जो I don't remember the actor's name though, but now he's making a film with he's playing a title role in a film. So there's no difference of medium over there. An actor, a performer. You are a feeling that people think that you are someone who's very strictly diet. Oh no, I eat anything and everything that comes my way. I've never dieted in my life. Really difficult to believe. So what I do is that because I can't diet, I have to work twice as hard as I have to lose weight. So yeah, I should train twice a day. I should do gym and cardio in the morning, then I should do gymnastics in the afternoon. So yeah, because I have a bad sweet tooth. Well, also I would like to tell you this thing. आप SRK fan हो, I know, but I also agree to a lot of fans who says that you are much more similar to Salman Khan. Yeah, the way you walk, the aura that you carry, and all of that. What do you have to say about it? I'm blessed. मतलब दो का जमाना एक में, वाह, lovely. करण, हर साल बिग बॉस में आपका नाम हमें सामने आता है कि करण इस साल बिग बॉस करेंगे, और आपके फैंस का ये मानना है कि करण कोई भी रियलिटी शो करेंगे तो जीत जाएंगे. Then why are you refraining from it? Because आज तो कोई जीता नहीं हूँ. नहीं, Big Boss is not my cup of tea because I don't think I have the temperament for the show. Yeah. अरे बिग तो मैं मुफड़ आदमी हूँ, मेरे से आपके हस्बैंड के भी घर में वाइब नहीं आई है? नहीं, मेरे को हाँ ना तो ना है, मतलब मैं बना भी हो नहीं सकता. It's too long a duration to remain fake. तो I think it's good that जाओ एक आध दिन के लिए, just go as a guest, मिलो, हाय हेलो करके आ जाओ बस. होता है ना, मतलब पीने को तो जहर भी पानी की तरह पी सकते हैं, पर पीते थोड़ी. Well, Ankita, Karan से मैं भी यही बात कर रही थी that what was the USP in Darren Shoe for him. So as a producer, I want to ask you, what did you find interesting in the script that you decided to bankroll it? So when Mark movies happened, because you wanted to see the husband go to work. इतने टाइम घर बैठा जा कुछ काम कर दे. Listen, go to work where I'm the producer. वहाँ भी तेरे साथ. बेटी को भी लगना चाहिए कि बाप कुछ काम करता है, जब से पैदा होता है घर पे देख रही हो. Alright. So when Mark movies came about, so Mark movies as a production house, हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 साल पहले register कर दिया था. And after that, COVID happened. Then we got pregnant, and Meher happened. So mentally हम लोग बड़े busy से हो गए थे. But at the back of my mind, I realized, after becoming a parent, somehow something happens and you feel more responsible. Everything happened but please.
I think he's tired. No, I'm just saying Meher happened, COVID happened, lockdown happened, but this didn't happen. Okay, sorry, continue. You can keep that, but that's a fact, by the way. Sorry, go ahead. अपनी ले लो तुम. दुनिया ले रही तो हम भी ना ले. Solo कर ले interview. Okay, so after becoming a parent, I somehow felt very, very responsible, and I wanted to do something which would leave a lineage for my daughter. So acting तो है, I come from a background of actors, but मेहर के लिए मैं चाहती थी वो पीछे देखे और बोले कुछ तो किया है मम्मी पापा ने. I come back and I like my parents have made this. For the love of your daughter. This is for the love of our daughter. And I thought Mark Movies as a production house मैं चाहती हूँ ऐसी कहानियाँ बनाए, रचे, पिक्चराइज करे जो हमारी सोसाइटी पे एक छाप छोड़ के जाएं, एक मार्क छोड़ के जाएं. This also comes from the fact कि आगे जाके मेरी बेटी को एक ऐसी सोसाइटी मिले जहाँ थोड़े थोड़े पॉजिटिव चेंजेस होके कुछ बेटरमेंट हो जाए. That is the school of thought I'm coming from. And when the script came to us at the right time, when we were ready to bankroll something, we were looking for scripts, and when this came to me, I slept over it and I knew it. I said, this is it. यही फिल्म है, यही कहानी है जो मैं चाहती हूँ घर घर पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, नई जनरेशन तक पहुँचे. And here we are sitting today after completion of the project and waiting for the release on 13th October. Also struggles की बात कर ही रहते हैं हम. लाइफ में तो स्ट्रगल्स सबके होते हैं, बट यू नो व्हेन यू हैव अ कंपेनियन अलोंग विद यू, क्या इन स्ट्रगल्स को फेस करना या क्या जर्नी थोड़ी बहुत आसान हो जाती है व्हेन यू हैव अ पार्टनर अलोंगसाइड यू? See, the struggle is there as a companion, as a couple, as individuals also. But I think during a struggle, when you're in a relation or when you're in a companionship, there's two kinds of struggle. One is your struggle on your personal front, and one is your struggle as a partner with somebody. So you're struggling at two different ends at the same time. So obviously the struggle alone is way easier than a struggle with a partner, because that also requires a lot of patience and a lot of bandwidth that you have to take and give, or probably become the punching bag or the backbone for the other person. You need to keep shuffling that role. Karan को as a husband कैसे describe करोगे, as an actor कैसे describe? Actor 10. Actor 10. Husband वो क्या होता है? He's a difficult husband. I'm not difficult, I'm just finicky about things. No, he's difficult. And Okay, interesting. as an actor, he's brilliant. Actor सबको पता है, difficult क्यों हो जाता है? As a husband, he's difficult because like his volume is so loud that मेरा जो भी मैं बोलना चाहती हूँ वो तो सुना ही नहीं देता. Then after a point हमने या तो आप वॉल्यूम कम कर लो या फिर मैं चुप हो जाऊँ, either or. वॉइस नोट छोड़ दो, बाद में सुन लूंगा. और हम सबको ये पता है कि हाल ही में यू गाइज हैव बिगन योर जर्नी ऑफ पेरेंटहुड, यू नो. तो आजकल हम सुनते हैं ऑल दीज न्यू पेरेंट्स सेइंग अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज योर वर्क लाइफ, योर पर्सनल लाइफ. वो बैलेंस बना के रखना पड़ता है, काम पे भी ध्यान दो, बच्चे भी संभालो. हाउ इज दैट प्रोसेस फॉर यू? हमारे लिए बहुत आसान है. By God's grace, God is really kind. We have a very wholesome family. Karan's parents and we live together. My parents are just 5 minutes away. So handling Meher for me is very easy. Handling office, Meher and the rest of the things is very easy for me. I think Meher has made it easy for us because she's such a happy-go-lucky and Yeah, she's a loving happy child. She gets along with. Yeah. There's not anybody who she doesn't know and she doesn't get along with. So yeah, it's amazing. When she's at my in-laws' place or she's at home, she's herself and she Very takes over. She independent. takes over the place where she is in. So we've never been too stressed about वो क्या कर रही होगी, मैं तो ये डर लगता है बाकी क्या कर रहे होंगे. और अब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, she knows कि हम ऑफिस जाते हैं. She knows Dharanchu. वो throughout फिल्म के दौरान हमारे साथ थी. She will be 4 now in December. तो उसको काफी अंडरस्टैंडिंग है and she'll say अच्छा, बट उसके हिसाब से मैं ऑफिस 1 घंटे के लिए जाती हूँ. Because for her that's like really less time. So I say, okay, आप 1 घंटे में आ जाओगे? And she says, yeah. She's fascinated with the number 500. फिर मैं 500 I said minutes. now मैं let's go up. मैं 500 minutes more. She doesn't know the difference that 500 minutes and Yeah, but for her it means massive So when you amount of time. That quality I मुझसे. कि उसको 500 का मतलब नहीं पता, तेरे से आई होगी. Lastly, how would you pitch Dharanchu to your fans? चलो पिच्चू. Why? I'm just going to tell them that 13th को आओ नहीं, मैं हाथ तब खोलूंगा ना जब मेरा भी कमबैक उतना ही बड़ा हो या थोड़ा सा तो बड़ा हो. So just that come to the theaters 13th
13th को आओ, 13th के बाद भी आओ और आते रहो and see the film, learn from it. Even if you don't want to learn, try and just understand what we are trying to say. And घर जाके सोचो उसके बारे में. I'm sure you won't regret. It's a very happy film at the end of it, you know. आप सबको आप अपने आप को देख पाएंगे इस फिल्म में. Karan is playing a common man. ऐसा common man जो हम सब हैं. You know, I'm sure you can also relate to the character when you see the film. Everybody can, because our film has a lot of issues that we deal with. I won't call them issues, but बहुत से ऐसे obvious facts हैं हमारी सोसाइटी के जिनसे हम डील करते हैं. एंड हम हर एक बंदा चाहता है कि ये काश ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होती, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते, कर नहीं पाते, बिकॉज हम डरते हैं. सो अपनी आवाज कैसे उठानी है, उन मुद्दों को किस तरह से बदलना है, एंड ज्यादा कोई आपको क्रांति नहीं लानी, वो आप बदलाव आपको अपने घर में अपने आसपास लाना है और अपने यहाँ बाहर का माहौल है वो बदलेगा. यही वो फिल्म है जो आपको देख के सिखाएगी कैसे. All in all, it is a progressive film, I must say. Not just one issue, there are 4-5 issues. lot of issues spoken about in the film in a very quirky comedy way. कोई preachy नहीं है. So please जाइए theaters में 13th October, 14th October, 15th October या उसके अगले हफ्ते. Just take your family and friends and trust you me, you'll come back with something. आप उस रात को इस बारे में जरूर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, and maybe next morning you will wake up a happier and more positive person. Yeah, and the biggest another reason for you to go and watch the film is if you've seen Ashutosh Rana before, you've never seen him like this. So वो इस वाले रोल में क्या करते हैं, कितना कर पाते हैं, ये देखने के लिए you'll have to come and see it. Also, Ankita, मुझे ये चीज अभी याद आई. Do you think that Karan took break from the television at the right time, at the right moment? I feel more than stereotyping, Karan needed this break because, like I said, you know, I was speaking to somebody else before and I said those 7 years, Karan was so mentally exhausted as well that I think he was losing his own essence as an actor and as a person. And he needed that break. Also to break that image that everybody still says Raman Bhala. Yeah. But Karan wants to be known as Karan Patel. But luckily for me, I, somehow or the other, maybe the way I am as a person, it wasn't that difficult because while being Raman Bhala also, I had somehow managed to create that awareness in people that people used to know that this is Karan. Having said that, but again, everybody wants that identity to be a regular basis identity, not a one-off. So I think to change, then to flip onto the other side, you need to take a break. Thank you. Thank you. Thank you, guys.